Hello students, so today we will discuss about the next concept, and the name of next concept is your matching concept, or otherwise known as matching principle. Matching concept or otherwise known as matching principle. So now what does this matching concepts speaks about? We can see that expenses which has been incurred to earn the revenue should be recognized in the year revenue is recognized. Okay, that means what we can say that it is necessary to match revenue of the period with the expense of that period to determine the correct profit or loss for the accounting period. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? That means whatever the expenses or cost which has been incurred for the particular accounting year. Okay, so जितना भी खर्चा और expenses हुआ है और cost incurred हुआ है in that particular accounting year, that expenses or cost must be matched with the revenue that has been earned in that same accounting year. Okay, so suppose our accounting year, it starts from say April say 1st 2020. Okay, and it continues till 31st March 2021. Okay, so that means whatever the revenue which has been incurred, okay, in this year, in this particular year, that means from April 1st 2020 till 31st March 2021, that revenue would be considered, उसको लेना पड़ेगा. Similarly, whatever the cost or expenses which has been incurred, हम cost और expenses जो हम incur करेंगे between this same accounting year, okay, so that expenses or cost would be considered to calculate the net profit or net loss of the particular business. Our main aim of accounting is to calculate the net profit or net loss. ठीक है, वो कैसे हम निकाल सकते हैं? Only by following the matching concept or matching principles. Now always remember, in this case certain point is to be noted. Okay, so first of all, what we have to see as all the revenue which has been incurred in the same accounting year. That means say example ये था April 1st 2020 till 31st March 2021. that means in the same accounting year जितना भी revenue, जितना भी हम पैसा कमाए हैं, ठीक है, in the same accounting year would be recognized. It should be recognized. Secondly, your all the cost or expenses which has been incurred to earn the revenue, is to be recognized. Okay, that would be in the same accounting year. That too must be in the same accounting year. देखो, कोई भी अगर रेवेन्यू हम इंकर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा और एक्सपेंसेस. ओके, नाउ थर्ड, you have to remember all outstanding expenses and prepaid expenses, both outstanding expenses and prepaid expenses should be carefully adjusted. उसको हमको adjust करना पड़ेगा. Now as we know, outstanding expenses का मतलब क्या होता है? Expenses which has been incurred but not yet been paid. ठीक है, suppose April 1st 2020 से 31st March 2021, ठीक है, there has been the outstanding expenses, कुछ हम खर्चा किए हैं, the expenses has been incurred, okay, but that expenses has not yet been paid. Okay, so that means that would be considered as what? As outstanding expenses. Say for example, in this year we have incurred an expenses of say 5,000 which has not been paid. ठीक है, पेमेंट नहीं भी हुआ है, then also we have to consider. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? To calculate the actual profit, हमको क्या करना पड़ेगा? All the outstanding expenses is to be
एडेड, जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन पेड इन एडवांस फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। इस साल अगर हम पैसा दे दिए, ठीक है, तो उसका बेनिफिट कब हम यूज करेंगे, ऑन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, दैट मींस आफ्टर 31 मार्च 2021 अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दैट वुड बी डिडक्टेड from the adjustment in order to calculate the net profit or net loss. Okay, now bit number 4, all accrued income or unearned income should be recognized and adjusted, should be recognized, ठीक है, should be recognized and adjusted, ठीक है। accrued income क्या होता है, income earned but not received। अगर हम इनकम अर्न कर चुके हैं इस सेम अकाउंटिंग ईयर में, पैसा नहीं मिला है, सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी कंसीडर्ड, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो accrued income और अदरवाइज नोन एज योर, इट इज अदरवाइज नोन एज अर्नड इनकम। हम पैसा कमा लिए लेकिन मिला नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दैट वुड बी एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट, ओके। सिमिलरली अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम पैसा कमाए नहीं है लेकिन हमको मिल चुका है, अगर वो इनकम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए है आफ्टर दिस डेट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, सो दैट वुड बी सब्ट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ओके। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, closing stock should separately be recorded। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हम कुछ परचेज किए हैं, उसमें से कुछ स्टॉक बच गया है, से 1 लाख का कुछ परचेज किए हैं, से 20,000 का कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सो इट वुड बी सेपरेटली सोन इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ओके। सो दैट्स द रीजन इट हैज बीन सेड that it is necessary to match revenue of the period, okay। इस पीरियड के बीच में सपोज जो भी हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं with the expense of that period in order to calculate the correct net profit or net loss for the accounting period, okay। Now next concept is our variable objectivity concept, okay। So what does this concept speaks about? According to this concept requires that all the business transactions should be recorded in an objective manner। तो ये क्या बोलता है कि whatever the business transaction which has been recorded, that must be recorded in an objective manner, okay। Objective manner means it must be recorded in a verifiable order or manner, ठीक है। So that means it means transactions is to be recorded on the basis of evidences। That means according to double entry system we know that to every debit there is an equal amount of credit। So whatever the transactions which has been incurred in our business, that all the transactions must be supported by an evidences of documents, and that all documents can be considered as your vouchers। That whatever the documents which has been required to support the evidence of a transactions, okay, so that evidence of document is known as vouchers। So we can say that all the accounting transactions should be evidenced and supported by business documents, okay। And always remember that what is the object of verifiable objective concept? Object is that it should be free from the personal bias of the businessman, ठीक है। जितना भी मेरा वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि nobody can mislead or fraud, can do fraud in the business, ठीक है।
Now, what are the documents which we can provide for the business? Documents such as your cash memo. As we know, cash memo is used for which transactions? Your cash transactions. जब कभी भी हम कुछ कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमको कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिलता है? हमको कैश मेमो मिलता है. देन अगेन योर invoice has been produced for which type of transaction? It is produced for your credit transactions. ठीक है. So in the business, as we know that both the cash and credit transactions is to be recorded. Okay. So in case of credit transaction, so credit transaction must be supported by an evidence known as a what? Evidence of documents known as invoice. इसके अलावा जितना भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होगा, ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? We have to fill up your pay in slip. ओके. सो इसका क्या होगा? काउंटर फॉइल होता है. एक पार्ट कौन ले जाएगा? बैंकर ले जाएगा. दूसरा पार्ट हमको रखेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सिमिलरली योर सेल्स स्लिप हो सकता है हम लोग को इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ सेल्स, एंड अदर एविडेंसेस कैन आल्सो बी देयर्स. ओके. सो नाउ व्हाट इज द नीड फॉर दिस ऑब्जेक्ट? उसका ऑब्जेक्ट क्या है? एज वी नो दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वॉट एवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच वी आर रिकॉर्डिंग, दैट मस्ट बी हैव सर्टेन योर डॉक्यूमेंट्स, सर्टेन एविडेंसेस on the basis of your documents. As we know that before paying the taxes to the government, it is the duty of your every businessman to produce the document to whom? To the your income tax department. Okay. So whoever the chartered accountant जो आएंगे हमारे accounts को audit करने के लिए, ठीक है, so our accounts must be audited with the help of what? With the help of only the documents that is based on which object? That is based on verifiable objective concept. Okay. Without the evidence of the